Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. सो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, वो करेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी का. ठीक है. एक सेकंड सर, वो मैंने वो जो कल आपने लास्ट में बोला था ना कि क्या बोला? वो लिख लीजिएगा, कंपैरिजन करना है चाइना का और इंडिया का, तो मैंने एक बार लिखा है, आप एक बार सुन लीजिए. हाँ वैसे बोलिए, तो बोलिए. ऐसा कोई मतलब सेंटेंस ज्यादा लिखा नहीं, बट नहीं ठीक है, 2-3 सेंटेंस भी लिखा है, दैट्स सफिशिएंट. बोलिए. In terms of military spending, India is far behind China. According to 2019 War Machine statistics, China spends around $261 billion, whereas India spends only $71.1 billion. Right. फिर सर मैंने नीचे जो है वो ये डेटा दे दिया है, ये जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है, इंडिया इतना खर्च करता है, चाइना इतना, ये सारे इसमें 2-3 दे दिए, सारे नहीं दिए. राइट, कोई बात नहीं. के बाद I have written, though in terms of military personnel, India leaves China behind. India spends 3.4 million. But लिखिए, but okay. Although the India, India's military personnel are greater in number, but in terms of equipment, military equipment, technology, and military science, China is far ahead. Right. इसको ऐसे लिख दीजिएगा. Right. In terms of मैंने लिखा दो. Although, yes, although in terms of military personnel, India leaves China behind. Yeah, in terms of military personnel, India, India's number is larger, but in terms of yeah, equipment, right, technology, and military science, China is ahead of India. Far ahead. Not far ahead, ahead of India. Right. Far इतना हमें क्यों ये करना है? Right. Simple ahead. जो वास्तविक सिचुएशन है हमें देना है. Yes. In terms of equipment, technology, military science of warfare, China is ahead of India. Yeah. Go ahead now. तो अब आपकी लाइन ऐड करके मैं फिर से पढ़ देती हूँ, मतलब यही से. So in terms of military personnel, India leaves China behind. India spends $3.4 million, whereas China spends $2.6 million. But in terms of equipment and military science, China is ahead of India. Based on this data, we can say China. ये बीच में डॉलर कहाँ से आ गया? आपने अभी डॉलर बोला, अभी आपने बोला इंडिया स्पेंड इतना. हाँ. वो ये वाला डेटा दिया ना सर, मिलिट्री पर्सोनेल वाला. अच्छा इन द हाँ, अच्छा, ओके. हाँ. सर ये जो मैंने पीछे पढ़ा ना, ये तो मिलिट्री स्पेंडिंग वाला, इक्विपमेंट स्पेंडिंग वाला था. एग्जाम में क्या होगा, आपको कोई भी डेटा याद नहीं रहेगा. राइट. ओके. आपको कोई एग्जाम में डेटा नहीं रहेगा. लेट मी टेल यू क्लियरली. राइट. बट यू हैव टू राइट इन अ क्वालिटेटिव वर्ड. राइट. कि लाइक जैसे लिखना, ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल, India is, ahead, but in terms of military science, equipment and technology, China is ahead. Right? Okay. China is far ahead in terms of nuclear warhead, in terms of naval assets, in terms of submarines, in terms of fighter jets, right? In terms of high. एक ही लाइन में समेट देना. ये तो concluding है होगा ना, कि how India and China power is very much asymmetrical. Right? Yes, sir. Right. Based on this data, we can say China outdoes India on most fronts. However, in the case of ground troops, Indian soldiers outnumber those of China. जो ये लाइन लिखी हुई है ना, तो यही लिखी है मैंने, ये ऊपर लिखी है इसमें. हाँ.
तो ठीक है, अभी मैंने इतना बड़ा लिख दिया, बट यू आर सेइंग कि कंक्लूजन में वी जस्ट हैव टू राइट वन लाइन कि भले ही मिलिट्री पर्सोनेल में इंडिया जो है वो चाइना से ज्यादा खर्च करती हो, लेकिन फिर भी इक्विपमेंट और मिलिट्री साइंस में खर्च नहीं चाइना करती हो, खर्च नहीं करती हो, नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल है वो ज्यादा है। खर्च तो यहाँ पे देखिए, खर्च तो ये बहुत ज्यादा कर रहा है, हाँ, हमारे से कितना गुना ज्यादा कर रहा है, राइट। मिलिट्री स्पेंडिंग जो है इनका बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। तो इंडिया चाइना रिलेशन में आपको लिखने में काम आएगा, या इंडिया चाइना और यूएस के बीच में अगर कोई मिला के क्वेश्चन दे दे तो भी काम आएगा, राइट। ओके, yes sir. Okay, now let me tell you, yeah, so we have finished BOP, balance of power, right? But before BOP, you know, BOP इसलिए मैंने पढ़ा दिया कि BOP की चर्चा होगी। जब BOP की चर्चा होगी तो आप पूछेंगे सर BOP क्या है, BOP क्या है, इसलिए पहले BOP पढ़ा दिया। What is power? What is power? Power is authority. No, power is ability. Ability. It is, yeah, it is, you know, ability to influence, right, the behavior of others. टॉपिक अभी नहीं, बस टॉपिक अभी कुछ नहीं है, बस समझा रहा हूं मैं आपको। आप लिख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए, नेशनल पावर। नेशनल पावर लिख लीजिए, टॉपिक भी लिख ही लीजिए, सही रहेगा कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, है ना। यस, या सो नेशनल पावर डिफाइन करने से पहले हमें पावर को डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज पावर, right? So power has been defined in various terms, and basic is it is ability to influence the behavior of others, right? yes sir. It is ability to influence the behavior of others. Fine. Yes sir. Right. So for example लिखिए, if A लिखिए, हाँ, note it down, yes. ओ सॉरी सर, मैंने नहीं लिखा, मुझे लगा आप समझा रहे हैं। नहीं, मैं समझा तो रहा हूँ, लिख लीजिए। नेशनल पावर, सिक्योरिटी पर आने से पहले हमें जानना, national power, the ability to influence the behavior of others, right? Yeah. If A is able to get things from B, if A is able to get things from B, you know, without any hindrances, right? Yeah. If A is able to get things from B without any hindrances, comma लिखेगा, otherwise B would not do. Otherwise, B would not do without A's influence.
here A has power over B. A has power over B. A simple power. जब power पढ़ाया था आपको तो भी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए A है और B है. A कुछ चाहता है और B अपने आप कर देता है. Right? So we can see that A is exercising power over B. Right? लिखिए, what is national power? वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर जो था ना उसमें क्वेश्चंस भी रहते हैं बाद में, मतलब बता दीजिएगा. अच्छा अच्छा, क्वेश्चन बनाने के लिए. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अभी ये खत्म कर लेते हैं ये पूरा चीज, उसके बाद आपको इकट्ठा 10-12 क्वेश्चन दे देंगे, है ना? यस. या अभी चाहिए तो बताइए, मैं अभी क्रिएट कर दूंगा. नहीं सर, नहीं. इकट्ठा दे वही देंगे. मैंने मतलब एक बार बता दिया कि उसके क्वेश्चन नहीं लिख पाए. राइट, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सो लिखिए नेशनल पावर. व्हाट इज नेशनल पावर? What is national power? Right. What is national power? It is capability of a nation state in international politics. It is capability of a nation state in international politics. National power depends on following. लिखिए, national power depends on following. पहले लिखिए ज्योग्राफी, लिखिए ज्योग्राफी. ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है. हाँ, नेशनल पावर तो आता नहीं है कभी, बट जानना जरूरी. ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ए लिखिए साइज, बी लिखिए लोकेशन, साइज, लोकेशन, सी लिखिए रिसोर्सेस, सी लिखिए रिसोर्सेस, डी लिखिए पॉपुलेशन, साइज, लोकेशन, रिसोर्सेस, पॉपुलेशन, देखिए टोपोग्राफी, Yes. right? So geography, national power depends on the geography. What kind of geography you have, right? So for example, India is the 7th largest country in terms of geography, right? Who is the largest country in terms of geography? Do you remember? Yes. Which country is largest in terms of geography? Russia. Russia, yeah. So Russia has more national power because it has more control on a greater part of geography. USA का कितना है? ऐसे कितना है मतलब what is the second? Which country is second in terms of geography? Which country? America. Yeah.
So the geography determines the national power, right? ऐसे तो फिर पर अफ्रीका तो है ही नहीं। या अफ्रीका में छोटे छोटे कंट्री हैं, अगर छोटे छोटे कंट्री हैं तो उनकी पावर कम है। It is it is not only one which decides the national power. It is one of the factor. Okay, the second factor is economy, right? The second factor is economy. अब economy में लिखिए industry, B agriculture, C industry, agriculture, service sector, etc. So larger the economy, more the national power, right? Which country has largest economy? USA. Right? So more economy, you more have power, right? Which country has the second largest economy in the world? China, right? So if you see, अगर geography होने के बावजूद रशिया के पास, Russia is not a second largest because here economy determines, right? And China has, मैंने कहा कि China has surplus economy, right? So that's why China is rising. Why China is rising? Because it has capability to to influence the entire world through its own economic engagement, right? Yeah. Right. The third is technology. The third is technology, right? Technology में लिखिए A software technology, B लिखिए technical skills, skilled personnel, टेक्निकल स्किल्ड पर्सनल, जो जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, right? Which country has more which country is more technologically advanced? It is USA. Right? Okay. Isn't it? Technologically US is unparalleled. आप टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस को चैलेंज नहीं कर सकते, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, यूएस को चैलेंज नहीं कर सकता, जापान को चैलेंज नहीं कर सकते आप। Now China is gaining, right? China is gaining, innovating lots of things, right? We are using lots of Chinese goods, right? पहले बोलते थे चले तो आसमान तक नहीं तो, और चले तो शाम तक नहीं तो आसमान तक, लेकिन चाइना प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता था ना। ये अभी भी मतलब it is losing faith actually अभी तो। right. But now China is resurging, China is reviving in terms of faith, especially in terms of technological area domain. मुझे लगता है सर ऑन ग्राउंड इट विल टेक टाइम, बिकॉज अभी वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो बैन कर दिया था एप्स वगैरह को, और राइट चाइना नो कि व्हाट इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। आपको टॉय, चाइना टॉय जो पैदा करता है वो 5 रुपए का भी पैदा करता है, और वो पैदा करता है 500 रुपए का भी। वही चाइना चाइनीज प्रोडक्ट अगर 500 रुपए का लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, वही 5 रुपया वाला बेकार रहेगा, ऑफ कोर्स। तो जजमेंट हमारा 5 रुपए देख के नहीं होना चाहिए, हमारा ये भी देखना चाहिए ओवरऑल चाइना जो प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सो द थर्ड इज टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज लिखिए मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर, it
it includes, Air Force, Navy, and other paramilitary forces. Right? Now tell me which country has more power in terms of military? USA. Of course, USA. Which one is second one? It's China. It's China, right? The military spending, right, of China is second highest in the world after USA, right? So sometimes मुझे लगता है, sometimes I'll show you the comparison between. But if you compare China and USA military spending, USA spending is huge, right? Huge, बहुत ज़्यादा. So military power 4 हो गया, 5 लिखिए. History of nation state. It is also one of the symbol of power, right? So what USA is known for? Liberty and justice, right? But China is civilization. China is civilization, right? If you see the European history, like history of Germany, Britain, France, right? It has a history of imperialism, right? Kiska? Britain, France, Spain. कॉलोनीज तो यूएसए में भी थी. कॉलोनी यूएस में थी. यूएस ने कभी किसी को कॉलोनी नहीं बनाया, एक्सेप्ट वियतनाम को उसने ऑक्युपाई कर लिया था, वियतनाम को छोड़ करके. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वो कंट्री में इंपीरियलिज्म था या वो कंट्री ने किया. नहीं, ये कंट्री ने किया. They have imperialist history. That means they were the imperial power. China was never imperial power. No. If you talk in terms of Tibet, then we can accept it, yes. But before WW2, right? China was not an imperial country. The Lucian Pai, the political scientist, what Lucian Pai said, China is a civilization pretending to be a nation. लिख लीजिए, अगर ये सेंटेंस कहीं पे जोड़ना हो तो जोड़ दीजिएगा, right? Civilization. India, yeah, China is a civilization, right? China is a great civilization. क्या मतलब? What is the difference? A civilization contains many nation states. Right. Islamic civilization, right? Indus Valley civilization, it contains many nations, right? Or European civilization. Yeah, बोलिए. So basically ये अपने आप को कंट्री क्लेम करते हैं, but Lucian Pai is saying कि ये एक civilization है, that means combination of so many nation states. Yeah. Lucian Pai कहता है कि China is, a civilization pretending to be a nation, right? Yeah. So these all are, major component of national power. जो जिसके पास ज्यादा रहेगा, but any nation state combine all these 5 factors. These are the major factors of national power. Even leadership, इसके अलावा leadership है, हाँ, diplomatic फेवरेट ये है, उसके बाद नेवर है. आपका नेवर कैसा है, उससे भी नेवर आपका जो नेशनल पावर है वो इंक्रीज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने यूएसए और कनाडा के बीच में कभी झगड़ा सुना है क्या? नहीं.
because they had good neighbor. Right. So leadership, good neighbor, there's also attributed power. Right. But this for all 5 factors are national power. If you look at the ancient the modern Europe, like जब हम पढ़ रहे थे कि ब्रिटेन, यूरोप का जो मेजर पावर कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, और कौन था बताइए? रशिया, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया था, राइट। और कौन था? हंगरी नहीं था वो ये ऑस्ट्रिया के अधीन में था, हंगरी। दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रिया हंगरी, राइट। ये कंबाइन था ऑस्ट्रिया हंगरी। अच्छा, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, रशिया कहाँ भूल जाते हैं, बहुत पावरफुल था। 1 2 3 4 स्पेन, पहला नेशन स्टेट था स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन था, वो सब पावरफुल नहीं था ये। लेकिन ये 4 नेशन थे, 4-5 नेशन, ये बहुत पावरफुल थे, एंड दे रिलाइड ऑन नेशनल पावर। किस पे रिलाई किया उन्होंने? नेशनल पावर। बट लेटर ऑन the nation state moved from national power to balance of power, right? लिखना है इसको, लिखिए एक लाइन लिखा देता हूँ, कैसे ये जुड़ गया, बैलेंस ऑफ पावर से जोड़ देता हूँ उसको। No, sir, I am saying कि हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हिस्ट्री भी है और पॉलिटिक्स भी है, right? What is politics? What is history? The politics of yesterday is history. What is history? Politics of yesterday. Politics of yesterday. Politics of the past. Yeah. Isn't it? Yes. तो ही तो हिस्ट्री है, थोड़ा सा लिख लीजिए। आपने लिख लिया, 5 पॉइंट लिख लिया नेशनल पावर का, द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ नेशनल पावर। यस सर, ये लिख लिया। अच्छा, लिखिए, इन द पोस्ट वेस्टफेलियन इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसे लिखिए, इन द पोस्ट वेस्टफेलियन 1648 international system or international politics, nation state of Europe relied on national power. National power. Later on, or later, simple, later, the nation state moved their strategy from national power to BOP, balance of power. BOP, national power. Even today, national power is key in order to secure
and protect national interest. Done? Yes, sir. Okay. Okay. Now come to the collective security. Mind it, एक चीज जब कल हम बात कर रहे थे, balance of power की, right? We talked about power. We talked about power, right? How power is balanced, how, what nation state would do to, maximize power, right? So, we studied, passing the buck, right? Yes. All this theory, this thinker like either Mearsheimer or Morgenthau, they are, the theorists of power politics. They are obsessed with power, politics, and they thought that, nation state is obsessed with, or their action is determined by the power, right? So politics is nothing but struggle for power, right? They are the realist. What they are? Realist. Yes, pragmatic thinker, right? And they think that, power can be antidote by power. Power creates a counter power, right? कल लिखवाया मैंने? Yes. Power creates counter power, and that, leads to balance of power, right? So, their theory is, जो वो international relation का जो analysis करते हैं, they do analysis on the term, on the basis of power. That's called power analysis, right? Yes, and sir. as a theorist, अगर आप categorize करेंगे, तो we call them as a realist thinker. क्या बोलते हैं हम? Realist thinkers. Yes. So for the realist thinker, what is the basic things, how to protect, how to promote power, how to maximize power, right? And if I say that who is the precursor, who is the, इनके दादाजी लोग कौन थे, ये जो पॉलिटिक इतने पावर की बात कर रहे हैं, तो मैं कह दूं आपको कि इनके जो दादाजी थे, वो सबसे बड़े दादाजी थे, राइट? अगर मैं इंडिया में बोलूं तो कौटिल्य थे, कौटिल्य, मंडल सिद्धांत, मैंने आपको लिखा है नहीं, बीओपी में एक लाइन जरूर ऊपर में लिखिएगा, कौटिल्य मंडल सिद्धांत, कौटिल्य, मैं भूल जाता हूँ ना बताते लिखते भी, पता है बहुत कुछ, हाँ, राइट, मतलब देखिए, अब जब बातें होती है, बातें जब जाती है तो दूर तक जाती है। कौटिल्य's मंडल सिद्धांत, मंडल थियरी, लिखिए, ऊपर में लिख दीजिएगा, कहीं लिख लीजिए इसको नोट में। कौटिल्य's, चाहे आप बीओपी के ऊपर जहां बीओपी शुरू किए हैं तब आप लिखिए, या कहीं पे नोट बना के, नोट हैश डाल के लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बीओपी पूछे या रियलिज्म पूछे तब तो मैं बताऊंगा कौटिल्य का। कौटिल्य's मंडल थियरी, मंडल थियरी is early theory of BOP, right? बस एक सेंटेंस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. बट अगर आप देखेंगे ग्रीस में, इन एंशिएंट ग्रीस, Thucydides, D-I-D-E-I-D-E-S, Thucydides, Thucydides work, Peloponnesian War, Peloponnesian spelling थोड़ा देख लीजिएगा, Peloponnesian War,
analyze BOP, right? आप मैंने Thucydides trap पढ़ाया, आपको बताया what is Thucydides trap, what is Thucydides trap? कि हमें जब दूसरा नेशन राइज करने लग जाता है तो इस वाले नेशन को ये मतलब खतरा लगने लगता है, फियर वाला जो होता है, ये आ जाता है, सामने वाला बंदा राइज कर रहा है तो फिर कल को हम इससे इशू हो सकता है. Right. So it is a fear, right? It is a fear of a nation state, right? And that determines the behavior. Okay? Yeah. So चलिए, तो ये all are realist. अगर मैकियावेली को पूछेंगे, मैकियावेली जो was इनके दादाजी थे, सबके पापा जी थे मैकियावेली. हॉब्स, what Hobbes talks about? हॉब्स कहता है कि because what is international system? अब इंटरनेशनल सिस्टम में कोई गवर्नमेंट है क्या? नहीं है ना. नहीं, वहां पे एनार्की है. वहां पे एनार्की है ना, है ना एनार्की. Yes. अब हॉब्स क्या कहता है, जब कब किसी कंट्री में एनार्की हो तो हॉब्स क्या कहता है? Each man is at the war of with every man, right? Yes, sir. Because there is no government. When there is no government, then there is there is anarchy, there is a disorder, right? There is a a war of one against each, right? War of one against each, right? And there is a constant fear of death. So जब इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है तो वहां पर भी there is always constant fear, right? And अगर एनार्की है तो each individual wants to maximize their power, right? In order to glory, पढ़ाया था मैंने आपको, नहीं थे आप ना? In order to glory, diffidence, in order to glory, diffidence and competition, right? अब एनार्की जब पढ़ाएंगे आपको रियलिज्म तब बताएंगे. तो हॉब्स है या मैकियावेली है या थ्यूसिडिड है या आपको हॉब्स, थ्यूसिडिड, कौटिल्य, ये सब कौन है? प्रिकर्सर्स हैं. कौन है? प्रिकर्सर्स हैं, राइट? ऑफ द ऑफ द थियरिस्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स. बाद में मिरसैमर हो जाते हैं, मॉर्गेनथौ आ जाते हैं. बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे. ये रियलिस्ट थिंकर हैं जो पॉलिटिक्स को किस टर्म में नापते हैं? पावर के टर्म में, राइट? यस सर. पॉलिटिक्स को किस टर्म में डिफाइन करते हैं? पावर के टर्म में. व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज नथिंग बट अ स्ट्रगल फॉर पावर, राइट? एंड ये कहते हैं कि पीस कैसे मेंटेन रहेगा? पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगा? बताइए. थ्रू बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर. पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इंटरनेशनल सिस्टम में तभी मेंटेन रहेगा जब बैलेंस ऑफ पावर होगा. यस, बैलेंस ऑफ पावर खत्म, पीस खत्म. और द आइडिया? यस सर. राइट. सो अब मैं कलेक्टिव सिक्योरिटी में घुसता हूं. इतना इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने के बाद कोई बात नहीं. चर्चा से तो अच्छी बात है कि एक चीज की बार बार अगर चर्चा हो तो ध्यान में आ जाता है ना कि नहीं? यस. ये टॉपिक लिखा हुआ है नेशनल, एक सेकेंड, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड पावर. राइट. तो उसी में से ये नेशनल पावर उसी में है. नेशनल पावर बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. बैलेंस ऑफ नेशनल पावर, फिर बैलेंस ऑफ पावर, फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी. अभी सिक्योरिटी क्या कॉन्सेप्ट है अभी इस टाइम पे? अब लिखिए कलेक्टिव सिक्योरिटी. एक वो दीजिए.
नेशनल पावर में ही है ये टॉपिक। हाँ 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 हाँ। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी लिखिए और लिखना शुरू कीजिए। कल हमने 6 पेजेस लिख दी थी सर, कितना ऐसा लग रहा था एग्जाम है। चलिए अच्छी बात है, दैट्स गुड, गुड। बट समझ में आया ना, समझ समझ के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए Yes. मैंने बताया कि जो IR है पूरा खिचड़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 6-8। और पता है जब मैं थ्योरी पढ़ाता था तो 3-4 PPT जाते जाते 2 घंटे खत्म हो जाते थे, राइट। बट IR कॉम्पेरेटिव ये सब है कि 15-16 PPT आराम से, कुछ है ही नहीं इसमें, बट आपको समझाते जाना है, लिखवाते जाना है। लिखिए, while realists think, लिखिए while realists think Yes sir. think BOP यानी balance of power is a strategy to maintain peace, security and stability in the international system, while realists think that BOP is a strategy to maintain peace, security and stability in the international society. Yeah. In the international society, the liberals believe that collective security is one of the mechanism to establish peace, security and stability. ये लाइन हमने कल भी कहीं पर यूज किया। सेम लाइन नहीं, कहीं यूज किया होगा लिबरल के बारे में। ऐसा कलेक्टिव सिक्योरिटी मैंने पढ़ा था कल। नहीं, कलेक्टिव सिक्योरिटी मैंने कहाँ बताया, कल BOP बता रहा था, बैलेंस पावर। चलिए लिखिए, the liberals believe that collective security is one of the mechanism to establish peace, security and stability. हाँ पढ़ा था, याद आ गया मुझे, मैंने आपको क्या बताया था, विड्रो विल्सन के बारे में, राइट। एंड मैंने बताया था कि विड्रो विल्सन वांटेड टू एस्टैब्लिश क्या, collective, he was very much critical of BOP, right, and he was to establish liberal political order. देखा ये ना सर, liberal world order where nation state can ensure security not through BOP but through collective security. Yes. So जो रियलिस्ट हैं, जो पावर पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो पावर के टर्म में पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं, उनके लिए पीस, सिक्योरिटी, एस्टैब्लिशिटी कैसे एस्टैब्लिश होगा, BOP के द्वारा, BOP के द्वारा। बट जो लिबरल्स हैं, राइट, जो लिबरल थिंकर्स हैं, वो पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी से, CS के थ्रू। यस, एक अंडरस्टैंडिंग आई। यस, एक अंडरस्टैंडिंग आई ना, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल सोसाइटी। जो इंटरनेशनल सोसाइटी बड़ा ही अनार्किक है, राइट, ये भी मानते हैं कि अनार्किक है इंटरनेशनल सोसाइटी। अब किसी भी स्टेट को, नेशन स्टेट के बिहेवियर को आप रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अब मान लीजिए कोई डोमेस्टिक नेशनल सोसाइटी है, अब नेशनल सोसाइटी में तो है, नेशनल सोसाइटी में पुलिस है, मिलिट्री है, लॉ है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर एस्टैब्लिश करते हैं। क्या एस्टैब्लिश करते हैं, ऑर्डर, सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश करते हैं। बट जब इंटरनेशनल सोसाइटी में कहते हैं,
नेशनल देखिए NATI इंटरनेशनल TRAL सोसाइटी लिखते वक्त ना मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। इंटरनेशनल सोसाइटी, जब इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करते हैं तो यहां पर देखिए ना कोई मिलिट्री है इंटरनेशनल लेवल का, ना कोई लॉ है, राइट। जो इंटरनेशनल लॉ है वो नहीं मानते हैं लोग, मानता है क्या कोई? नहीं मानता है। तो यहां पर क्या है? डिसऑर्डर है, यहां पर क्या है? एनार्की है इंटरनेशनल सोसाइटी में, राइट। बट नेशनल सोसाइटी में ऑर्डर है, राइट। बट जब नेशनल ऑर्डर में डिसऑर्डर है, एनार्की है, तो जब एनार्की है तो एनार्की बड़ा खतरनाक चीज होता है। जब कोई मान लीजिए कि बोल दिया जाए कि इंडिया में सारे पुलिस वाले को बैन कर दो, मिलिट्री बैन कर, सारा बैन, क्या होगा? लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, काटेंगे, जो जीतेंगे वही रह पाएंगे, राइट। यस। तो ये जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? डिसऑर्डर। और क्या आ जाएगा? एनार्की, राइट। जब एनार्की आ जाएगा तो बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन होगा, राइट। जब ये खतरनाक सिचुएशन होगा, मान लीजिए फिर से कंट्रोल करना है, ये ना, फिर से पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो आपको फिर से गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, है ना। फिर से आपको लॉ बनाना पड़ेगा, फिर से पुलिस, फिर से मिलिट्री, सबका इंतजाम करना पड़ेगा। Peace and security is a prime thing for any nation state, right? But at international level, we don't see any such kind of peace, order, security. No, is it not? है कि नहीं? है क्या? हाँ? अब मान लीजिए गली में गुंडे हैं, 10 गुंडे हैं, बहुत बदमाशी कर रहा है, तो आप किसको फोन करते हैं? पुलिस को फोन करते हैं, है ना? यस यस। या पुलिस को नहीं फोन करेंगे तो आप अपने घर वाले को बोलेंगे देखो ये लौंडा कैसा कर रहा है ना, पहले। नहीं तो आप पड़ोसी को बोलेंगे, पड़ोसी आके जाके, जब इस सब से नहीं संभलेगा तो आप किसको क्या करेंगे? पहले तो लोग खुद ही संभाल लेना चाहता है कि खुद ही संभाल जाए। यस। तब आप क्या करते हैं? पुलिस में जाते हैं, पुलिस वाले को बुलाते हैं डंडा चलवाने के लिए। बट इंटरनेशनल लेवल पे मान लीजिए कल पाकिस्तान भारत पे अटैक कर दे, आप किसको फोन कीजिएगा? प्रधानमंत्री किसको फोन करेंगे? कोई नहीं है। नहीं है ना, कोई ऐसा इंटरनेशनल पुलिस तो नहीं है ना कि पाकिस्तान को आके टेम करेगा, डंडा चलाएगा, नहीं है, नहीं। तो पाकिस्तान किसको फोन करेगा? पाकिस्तान किसकी सहायता लेगा? पाकिस्तान अपने पड़ोसियों की या जो दूरस्थ पड़ोसी हैं उनकी सहायता लेगा, अपने दादाजी को फोन करेगा, अमेरिका को। यस। दादाजी देखिए क्या बच्चा आपका क्या कर रहा है। ऐसे ही होता है, राइट, इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी जो है बड़ा ही डिसऑर्डर्ड है, अनार्किकल है, राइट। अब इस डिसऑर्डर्ड एंड अनार्किकल सोसाइटी को मैं पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी एक मींस है। क्या है ये? मींस है। एक समझ में आया? या समझ में आया? ये सर, जैसे बीओपी है एक साइड, वही दूसरी साइड जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी भी एक तरीके से। हाँ, एग्जैक्टली। ये तो मुझे समझ में आता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी है जिसकी वजह से पीस सिक्योरिटी स्टेबल, बट कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है वो थोड़ा सा अभी बताते देखिए, अब लिखिए। और ये आज पीपीटी के ऊपर ये ब्लैक पूरा पता नहीं क्यों आ रहा है। ब्लैक किस चीज का? आपको नजर आ रहा है? ये मेरे में आ रही है ब्लैक स्ट्रिप। नहीं, आप नहीं आ रहा होगा, मैं तो ब्लैक स्ट्रिप कभी नहीं डालता हूँ, हो सकता है कुछ इश्यू हो। मैं लिखवा देता हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है, ये ऊपर पूरा ब्लैक स्ट्रिप आ रहा है। खैर कोई नहीं सर, ऐसे नजर तो मुझे आ रहा है ना। चलिए अब लिखिए, द कलेक्टिव सिक्योरिटी
लिखिए, द कलेक्टिव सिक्योरिटी, Yes, sir. the collective security is an arrangement by which states act collectively to guarantee one another's security. The term collective security is an arrangement by which states act collectively to guarantee one another's security. Full stop. It is based on the principle that an attack on one is an attack on all. It is based on the principle that an attack on one is an attack on all. Yeah. Right? Right? लिख लिया? Yes, sir. It means a threat to security of one state, a threat to the security of one state. It means a threat to the security of one state is a threat to the international community as a whole. It means a threat to the security of one state is Yes, a sir. threat to the international community as a whole. Yes. It is one type of collision building strategy. It is one type of collision building strategy. It is one type of collision building strategy in which a group of nations agree not to attack each other, Yes, sir. and to defend each other against an attack. Comma, if such an attack is made. It is made. Okay. If such an attack is made. Full stop. Now you got the idea. It is a collision building system जहां पर सब कंट्री आपस में ही एग्री करते हैं कि कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा. अगर कोई किसी कंट्री किसी दूसरे पे अटैक करता है तो वो जो अटैकर है वो अग्रेसर माना जाएगा, है ना. और सब लोग मिल करके जो एग्रेसर है उसको पकड़ के कूट देंगे. ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी. मतलब हम सब लोग साथ साथ हैं वाली बात. समझ में आया? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता ना. अभी बताते हैं आपका प्रैक्टिस भी बताते हैं. अभी तो थियरी बता रहे हैं. आप सोचिए ये थियरी आया था लीग ऑफ नेशंस जब आए थे. अभी बताते हैं कि अभी बताएंगे हिस्टोरिकल ओरिजिन भी बताएंगे, आपके प्रैक्टिस भी बताएंगे, कब कब हुआ है, क्यों नहीं हुआ वो भी बताएंगे कि क्यों ये उतना सक्सेसफुल नहीं था. चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. its aim is
its aim is to establish peace, security, and stability in the international system. Yes, sir. If any state becomes aggressive, if any state becomes an aggressive and use unlawful force against any nation, Yes, sir. then then the combined force will attack the aggressor. It is an organized, लिख दिए, aggressor. Yes, sir. हाँ, full stop बदल के लिए it is an organized power of international community. It is an organized power of international community to punish the aggressor, Yes, sir. right? Yes, it was opted one of the basic principle of UN Security Council. Right? Yes, sir. We can say it is an institutionalized BOP. It is an institutionalized BOP. ये भी पावर का बैलेंस है, बट इंस्टीट्यूशनलाइज है, यूनाइटेड नेशन के पास है ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको ऑपरेट करती है. नहीं, क्या सर, फिर से बता दीजिए. देखिए, इट इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बीओपी. नहीं, जो आप अभी समझा रहे थे. अच्छा, अभी बताऊंगा, अभी पहले ये लिख लीजिए. आपने लिख लिया, तब फिर मैं बताना शुरू करूंगा. It is an institutionalized BOP. Yes, sir. मैं कह रहा था कि ये भी तो पावर का बैलेंस है ना, कि मान लीजिए ए पे बी पे अटैक करता है, तो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर के ए पे अटैक करेगी. राइट? यानी कि पावर बैलेंस करने के लिए ये भी एक सिस्टम है, बट ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, मतलब ये यूनाइटेड नेशन के हाथ में. राइट? इसका जो ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो एक्चुअली इसके हाथ में. देखिए, इट इज बेस्ड ऑन टू फॉलोइंग आइडियाज. अगर फिर सभी मिल जाएंगे तो पावर ज्यादा हो गई ना, उनसे ज्यादा हो गई, तो it is also one kind of balance of power. इवन जब रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि हम अभी भी पावर बैलेंस है, जब वर्ल्ड यूनी पावर है तो हेजेमोनिक है, यूनिपोलर है वर्ल्ड, तो भी पावर बैलेंस है. राइट? क्योंकि अमेरिका अकेला दादा है और वो दूसरा कोई वार नहीं कर सकता. जो अमेरिका चाहता है वो होता है, और अमेरिका पीस ही चाहता है. राइट? Yes, sir. देखिए, it is based on two ideas. It is based on two ideas. First, power is antidote to power. कहते हैं ना, वायरस को मारने के लिए वायरस ही चाहिए होता है. हाँ.
And second, one for all and all for one. Yeah. लिख लिए? Yes. अब पैरा चेंज करके लिखिए. The UN Security Council, the UN Charter, ऐसे लिखिए, the UN Charter Collective Security System the UN Charter Collective Security System Yes. grants power to Security Council to ensure peace and cooperation in the world through collective security. Yeah. Yeah. Look at all five permanent members, but P5, all permanent 5 members are conferred with responsibility. All permanent P5 members are conferred with the primary responsibility for the maintenance of international peace and security. Yeah. The Security Council enjoys discretionary power in making decision regarding existence of threat, act of aggression and breach of peace. Under Article 39 of UN Charter. Right? Done, sir. Like a historical origin of CS. CS matlab collective security. Historical origin. Like in the post WW1, Woodrow Wilson has given 14-point program. Woodrow Wilson, he was a political science professor. He was professor of political science, before joining politics. Yeah. Right. And he was also propounder of public administration, discipline have public administration. He was a very much, knowledgeable person. He was a professor. In the post WW1, Woodrow Wilson has given 14-point program to establish peace and democracy worldwide.
14-point program to establish peace and democracy worldwide. Yes, sir. The League of Nations included a provision that if any state attack other state, the League of Nations included a provision that if any state attack other state, then Yes, it would be duty of all to protect the victim. It would be duty of all to protect the victim and punish the transgressor. It would be duty of all to protect the victim and punish the transgressor. मतलब जो हमला करने वाला है, जो वायलेट करता है पीस को, ट्रांसग्रेसर जो पीस तो ऑलरेडी है ना, लिबरल का कहना है कि ऑलरेडी पीस है सोसाइटी में, है ना, तो अगर कोई हमला करता है एक दूसरे पे तो पूरा सब लोग मिलकर पकड़ के उसको थकुच देंगे। तो ये ट्रांसग्रेसर और अग्रेसर एक ही है? एक ही है, एक ही मतलब होता है। हाँ हाँ, एक ही मतलब है। देखिए आर्टिकल्स 10 to 17 of the Covenant of League of Nations, Articles 10 to 17 of the Covenant of the League of Nations yes, formed the core of its collective security system. Formed the core of its collective security system. Yes. Article 10 of the League of Nations, Article 10 of the Covenant of Article 10 of the Covenant of the League of Nations, Article 10 of the Covenant of the League of Nations provided that yes, the members of League shall respect and protect its members. The members of Leagues shall respect and protect its members against any external attack. Yeah. The League of Nations, the Covenant of the League of Nations. Covenant of League of Nations. ये covenant नहीं समझ में आया? नहीं, Covenant of League of Nations. ऐसे हम इसको करते हैं, covenant को कॉन्स्टिट्यूशन कर देते हैं और फिर लीग ऑफ नेशन को इंडिया कर देते हैं। अच्छा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। समझ में आया? कोवेनेंट मतलब होता है कोई रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे यूएन चार्टर बोलते हैं, यूएन के टर्म में हम चार्टर बोलते हैं, कोवेनेंट नहीं बोलते, है ना? तो ये कहाँ का है? ये लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बना था तो उसमें कोवेनेंट कहा गया था। द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन अच्छा, ठीक है। does not recognize
Yeah. समझ में आया? Covenant. The covenant of the League of Nations. Written document. Exactly. Yes. The covenant of the League of Nations does not. ऐसा तो नहीं कह सकते कि Article 10 of the League of Nations नहीं. League of Nations का कोई article नहीं है. League of Nations का covenant है, उसके article है. आप ऐसा नहीं कह सकते कि Article 10 of India. अरे इंडिया कोई आर्टिकल नहीं है भाई. ऐसा कहेंगे कि Article 10 of the Indian Constitution of India, है ना? Article 10 of the Constitution of India. तो इसे ऐसी तरह बोलते हैं. The covenant of League of Nations does not recognize protection and respect of members state except external aggression. Except external aggression. Therefore, it is a narrow concept of collective security. Therefore, it is a narrow concept of collective security. Yes, sir. देखिए पैरा चेंज कीजिए और लिखिए the concept of collective security was incorporated. The concept of the collective security was incorporated in the United Nations. Yeah. So it's important organs or देखिए it's important मत लिखिए, ऐसे लिखिए the Security Council, the UN Security Council, ऐसे लिखिए the UN Security Council has been assigned the task of collective security. Yeah. The UN Charter permits collective measures Yes, sir. to be employed to maintain or restore international peace and security. International peace and security. Yeah. Done? Yeah. Okay. लिखिए collective security during Cold War. Sir, just coming in 1 minute. Yeah, go ahead.
Yeah. Yes. There are following example of CS. There are following examples of CS during Cold War. There are following examples of CS during Cold War. पहला लिखिए, पहला लिखा? Yes, sir. पहला लिखिए, North Korea's attack North Korea's attack against the Republic of South Korea. और Republic of Korea बोलते सिंपल, कोरिया in 1950. समझिए हुआ क्या, लिख लीजिए, नॉर्थ कोरिया's attack against the Republic of Korea in 1950. ये पहला एग्जांपल था कलेक्टिव सिक्योरिटी का. Yes, sir. क्या हुआ कि 1950 में आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था 1950 में, राइट? Yeah. और कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था. अब क्या हुआ कि पता है पूरी दुनिया दो गुट में बट गई थी. आपको बताया मैंने कि पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, दो पावर ब्लॉक में बट गया था. अब जर्मनी के दो भाग हो गए थे, एक भाग यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, एक भाग कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता था. कोरिया में भी ये हो गया. और आपको पता है कि कोरिया उस समय जब वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था उस समय जापान की कॉलोनी थी. किसकी कॉलोनी थी? जापान की कॉलोनी थी. अब जब जापान हार गया, मान लीजिए आप और मैं लड़ाई कर रहे हैं और आप हार गए, तो आपके घर की सारे सामान मेरा. Yes. तो यही हुआ कि अब कि कोरिया की कॉलोनी थी कौन? जापान की कॉलोनी थी कोरिया. अब जापान हार गया. अब जापान हार गया. अब कोरिया किसकी हो गई? विनर की, जो जीता. अब जीतने वाला कौन था? यूएस और यूएसएसआर दोनों. तो आधा यूएस ने बांट लिया और आधा रशिया ने यस अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया. आधा लोग रशिया की तरह जीना चाहते थे, आधा लोग अमेरिका की तरह जीना चाहते थे. अब क्या हुआ कि 1950 में आते आते नॉर्थ कोरिया ने, जो यूएसएसआर से सपोर्टेड था, ये कम्युनिस्ट स्टेट था, नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया. किसके ऊपर? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको साउथ कोरिया बोलते हैं, इसके ऊपर अटैक कर दिया 1950 में. ठीक है? यस. अब जब कोरिया अटैक कर दिया तब सिक्योरिटी काउंसिल में बात उठी कि ये तो अटैक हुआ है. जब अटैक हुआ है तो हमारे पास कलेक्टिव सिक्योरिटी है, हमारे पास सिस्टम है ना पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए. तो क्या हुआ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया, राइट? और उस रिजोल्यूशन के तहत यूएन के फोर्स ने यूएस के लीडरशिप में नॉर्थ कोरिया पे अटैक किया. किसके ऊपर अटैक किया? यूएस के लीडरशिप में नॉर्थ कोरिया पे अटैक किया. किसने? यूनाइटेड नेशन ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, राइट? उसमें जो झंडा था, जो लड़ाई कर रही थी, वो यूएन फ्लैग के अंदर लड़ाई हो रहा था. और कुछ ही दिन में नॉर्थ कोरिया के जो जितने भी आर्मी थे उसको 38 डिग्री पैरेलल के पीछे धकेल दिया. आपको पता है 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर लाइन है. यस. है ना? यस. या लिखिए, लिख दिया आपने पहला एग्जांपल.
ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से आज अभी भी नहीं बनती ना इनकी, अभी भी नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। नॉर्थ कोरिया को तो रोग स्टेट बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया अभी तक अपने चीजों को ओपन नहीं कर रहा है। वहां पर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो दुनिया से कोई मतलब नहीं है उसको, राइट। और वहां पे किंग जोंग जो है ना, उनका चल रहा है बस। वो तानाशाह है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल तानाशाह, इट्स कम्प्लीटली। मैंने उनका कोई वीडियो देखा था या पता नहीं पढ़ा था वो सर, जैसे कोई उनकी कॉन्फ्रेंस में या किसी चीज में ऐसी गैदरिंग होती है, तो अगर कोई सो जाता है या आग लग जाती है मतलब जैसे किसी की, तो वो उसको मार देते हैं। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं, उन्होंने गोली चला दी सीधा। देखिए मैनिक इंसान जो है ना, पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। आप हिटलर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या स्टालिन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, वो वही है बस। वही है वो तो, भी। हाँ, तो उनका एक पर्टिकुलर रिजिडिटी है, पर्टिकुलर ये है, राइट। तो उसके आप हिटलर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब वो गोली चलाएगा, किसके ऊपर गोली चलाएगा? हाँ, स्टालिन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब स्टालिन ने अपने फ्रेंड ट्रोट्स्की को कहाँ जाके मरवाया? मैक्सिको में, बताया था ना मैंने। यस। तो ये तो सामने बैठा रहता है, कोई जो आंख लगे तो मार ही देगा गोली, कोई बात नहीं। हाँ, तो दूसरा तो सचेत हो जाएगा कि भैया सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए आंख में मिर्ची झोंक लेना है, लेकिन गोली नहीं झोंकना है ना, राइट। यस सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे जो सन की, इसको बोलते हैं सन की रूलर, ठीक है। ये तो कोरिया में कौन सा फॉर्म फॉलो हो रहा है मतलब? सोशलिस्ट कौन? सोशलिस्ट लगता तो नहीं। नॉर्थ कोरिया, अरे सोशलिस्ट के नाम पे बहुत सारा एट्रोसिटीज होते हैं। मार्क्स भी शर्मा जाए, कार्ल मार्क्स आ जाए ना तो शर्मा जाए इनके सामने कि मैंने क्यों कॉन्सेप्ट दिया ये क्या सोशलिस्ट का। कॉन्सेप्ट दिया मैंने, उन्होंने तो बदल ही दिया कॉन्सेप्ट। यस, और ये लोग कार्ल मार्क्स को भी गोली मार देंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर कार्ल मार्क्स, मान लीजिए ये लोग कार्ल मार्क्स का बड़ा बड़ा फिगर लगा के रखते हैं, लेनिन का बड़ा बड़ा फिगर लगा के रखते हैं, बट अगर लेनिन कुछ बोल जाए अंदर से या कार्ल मार्क्स कुछ बोल जाए तो वो उसी पे गोली चला देंगे, बोला किसने, राइट। नहीं सच में नहीं लगता सर, सोशलिज्म तो कहीं नहीं लगता। मुझे लगा कुछ ऐसा होगा ये। No, it's a complete dictatorship. It's a complete absolute dictatorship, right? Have you heard of democracy? The role of military, right? So चलिए, पहला लिखा, पहला क्या लिखा, पहला एग्जांपल, North Korea's attack against the Republic of Korea in 1950. 1950 डॉट लिखिए, ये आप खुद लिख सकते, लिखिए नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड। इसी में है कि नेक्स्ट है? हाँ, इसी में लिखिए, इसी का एक्सप्लेन। नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड, यस सर। नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड the Republic of Korea in 1950. North Korea invaded Republic of Korea in 1950, led to pass a resolution for collective security. Yes sir. The UN forces, yes, under its flag, again, yes sir. in the leadership of United States, US, in the leadership of US, yeah, attacked North Korea, yeah, and compelled her yes,
to withdraw its military behind the 38-degree parallel line. Yeah. Done? Okay. Second example लिखिए. Second example लिखिए, Southern Rhodesia. Southern Rhodesia in 1966. Yeah, simple, 1966. Southern Rhodesia, 1966. Yeah. The UN Security Council allowed UK forces Yes, sir. to impose trade norms in Rhodesia. Yeah. Third लिखिए, the Uniting for Peace Resolution. Uniting for Peace Resolution. इसका टाइमिंग आया था यूनाइटेड पीस, ये 1950 में ही आया था. क्या हुआ, मैं एग्जांपल बताता हूँ क्या हुआ, घटना समझिए. जब नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया किसके ऊपर, साउथ रिपब्लिक कोरिया. हाँ, तो क्या हुआ, क्या हुआ, तो यूएन फोर्सेस ने जो है उनको लीड किया और उनके साथ मतलब नॉर्थ कोरिया ने उनकी लीडरशिप पर उनके ऊपर अटैक कर दिया और उन्होंने अपनी मिलिट्री पीछे करनी पड़ी. फिर तो 38 पैरेलल लाइन जो है वो उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया हो गया, नीचे जो है वो साउथ कोरिया हो गया. राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. अब क्या हुआ, इसको टाइमिंग मैं देख रहा था 1950 है, लिखिए. जब इस अटैक के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर यूएन के फ्लैग के अंदर तो अटैक करने गया था कौन, यूएस, बट यूएस ने यहाँ पर अपनी मनमर्जी की. ठीक है, जो इनके कमांडर थे मैकआर्थर, राइट, उस समय यूनाइटेड स्टेट के कमांडर जो थे मैकआर्थर, उन्होंने अपनी मनमर्जियां की. तब क्या हुआ कि अब यूएन को लगा कि आपको पता है यूएन में जनरल असेंबली है जहां पर पूरे वर्ल्ड के लोग मेंबर हैं. वहां पर 191 कंट्री मेंबर है जनरल असेंबली में. यस. राइट. अब देखा कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये तो अपनी मर्जी से काम कर रही है. और मैं बता दूं कि ये जो अटैक हो भी गया, क्योंकि उस जब रिजोल्यूशन पास हुआ था तब रशिया नहीं था और रशिया के अभिषेक का फायदा उठा करके इन लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया. नहीं सर, ये अब अभी आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं ये आप कोरिया से ही कर रहे हैं, मतलब कौन से अटैक की वो, मैं समझा नहीं, क्या पूछा आपने. सर आपने अभी बोला ना कि अटैक किया. मैंने तो कहा ये कि अटैक जी मैं क्या क्वेश्चन, क्लियरली क्वेश्चन पूछिए. सर आई एम सेइंग कि अभी आप बोल रहे थे ना कि अटैक किया, जब अटैक किया तो वो अब किस अटैक की बात कर रहे हैं, ये जो कोरिया ने किया था, कोरिया अटैक की बात कर रहे हैं. यस, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ. नॉर्थ कोरिया पे जब अटैक हुआ है यूएन के फोर्स ने किया है, तो यूएन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास हुआ, राइट. उस रिजोल्यूशन में कौन नहीं था, यूएसएसआर नहीं था, एब्सेंट था. तब ये पास हो गया. अगर मान लीजिए यूएसएसआर होता तो ये तो P5 का मेंबर है ना, इसके पास वीटो है. अगर ये वीटो लगा देता तो ये नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता, राइट.
अब देखा कि यूनाइटेड नेशन ने कि ये तो अपनी मर्जी से कर रहा है। अब क्या हुआ कि 1950 में जनरल असेंबली ने कहा कि भैया आप तो डिसीजन मेकिंग जो 5 लोग मिलके कर रहे हो उसमें हमारा भी कुछ डिसीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा भी कुछ डिसीजन होना चाहिए। इसका यूएन जनरल असेंबली, यस यस। तो उसने एक पीस रिजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन 1950। अब लिखिए, द यूएन जनरल असेंबली। नहीं, एक सेकंड सर, वो जो अभी आपने कहा कि ये तो अपनी मर्जी से कर रहा है, वो यूएस के लिए था कि यूएस की लीडरशिप में था, क्योंकि तो वो अपनी मर्जी कर रहा था। हाँ 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 हाँ, ठीक है, राइट। तो जनरल असेंबली ने एक ये पास किया यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन, राइट। पास इट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी। बोले कि हमें भी पूछिए कलेक्टिव सिक्योरिटी कैसे करना है, कैसे कहाँ करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं कि आप 4 लोग मिलकर 3 लोग मिल करके हाँ आप यूएन के नाम पर आप करते हैं, राइट। यस सर। फोर्थ लिखिए, द इमरजेंस ऑफ यूएन पीस कीपिंग। ये नहीं लिखा मैंने, द यूएन जनरली असेंबली। लिख लीजिए, द यूएन जनरल असेंबली passed the Uniting for Peace resolution to make decision of the Security Council more democratic. ऐसे लिख दीजिए। The Uniting for Peace resolution ब्रैकेट में 1950 लिख दीजिएगा, to make decision making process of Security Council more democratic. Yeah. Then fourth लिखिए, emergence of UN peacekeeping. इंडिया ने भी पार्टिसिपेट पीस कीपिंग फोर्स में, पता है, अपने फोर्सेस को भेजा था, पार्टिसिपेट किया था यूएन पीस कीपिंग में। वो अभी भी बहुत पार्टिसिपेट करता है। फोर्थ लिखिए, इमरजेंस ऑफ यूएन पीस कीपिंग। यस सर। देखिए, इन 1956 yes, the General Assembly yes sir, monitored yeah, the ceasefire agreement yeah, reached by Israel and Egypt in 1956 following the Suez crisis. Following the Suez crisis. yes sir, The UN, next sentence, the UN initiated peacekeeping mission in yes, order to promote peace and and security. yes, पांचवा लिखिए, Gulf War in 1990. Gulf War in 1990. yes sir, When Iraq invaded Kuwait in 1990,
the Security Council passes a resolution and Iraq was forced to withdraw back. Yeah. पैरा चेंज कीजिए और लिखिए although Yes. collective security was a novel idea. Collective security was a noble idea. Yes, sir. To promote peace, security, and stability in the international society. इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल सिस्टम, कुछ भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड सोसाइटी, राइट। हाँ, आपको उतना जानने की जरूरत नहीं, बट सब अंतर है, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? Although collective security was a noble idea to promote peace, stability, security in international system. हाँ, international system, but it was measurably failed. It was measurably failed on many occasions. On many occasions, due to power conflict between the USA and the USSR. Yeah. अब लिखिए post collective security in the post Cold War era. In the post Cold War, लिखिए CS. एक सेकेंड अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी कोई हो रहा है, वॉर हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मतलब बोल रही है, तो फिर फोर्सफुली उनको अपना मिलिट्री पीछे करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे अगर हमें कोई अटैक करता है या जो भी, तो हम पुलिस को फोन करते हैं, तो ऐसे तो फिर आप ये जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी तो एक तरीके से वैसा ही रोल निभा रहे हैं। Yes, come to, they supposed to, yeah, they are supposed to international police. हाँ, तो फिर मतलब ये है कि जैसे हम चाइना कर रहा है हमारे साथ, तो हम उनकी मतलब उनको नहीं कह सकते, उनको हेल्प नहीं ले सकते। यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, देखिए अब क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में कितने लोग हैं? पुलिस कितने? तो परमानेंट तो पास, यही तो पुलिस है कौन इसमें? इसमें खुद चाइना है। ये चाइना पास होने देगा क्या? अच्छा नहीं, राइट। तो यहाँ पर देखिए यूएस है, रसिया है ना, P5, यूएस है, रसिया है, चाइना है, फ्रांस है और यूके है, यही तो है, यही 5 कंट्री है ना। हम भी मांग कर रहे कि हमें भी दे दो, हमें भी इसमें घुसा लो, 6 बना लो, 8 बना लो, 15 बना लो इसको, मेक मोर डेमोक्रेटिक, राइट। बट क्या अगर मान लीजिए कि कल को अगर चाइना नहीं होता, मान लीजिए आज हमें पाकिस्तान अटैक करता है, राइट? नहीं, एक सेकंड सर, क्या अगर से फिर से बोल दीजिए, आपकी आवाज बीच में चली गई थी। मान लीजिए कि चाइना की जगह पे हम दूसरा लेते, पाकिस्तान हमें आज अटैक करता है, तो क्या सिक्योरिटी काउंसिल किसके पाकिस्तान पे अटैक करेगी? चाइना है तो हो सकता है नहीं करे, क्योंकि चाइना हो सकता है पक्ष लेगा। यस, वीटो यूज करेगा, राइट। आपको पता है जब इंडिया ने बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से, उस समय सिक्योरिटी काउंसिल ने बार रिजोल्यूशन पास किया और इंडिया को एग्रेसर माना, बट उस वक्त रसिया ने, जो उस वक्त यूएसएसआर कहलाता था, 16 बार वीटो यूज किया। कितनी बार? 16 बार वीटो यूज किया। तभी नहीं तो इंडिया पे अटैक हो सकता था।
अगर रशिया भी साथ में आ जाता, अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी रियली में अगर वो होता, तो इंडिया पे अटैक होता, क्योंकि इंडिया वाज एग्रेशन। इंडिया ने पहले अटैक किया था। इंडिया ने ये इंटरनल अटैक किया था। मतलब पहले तो पाकिस्तान ने अटैक देखे, देयर आर क्लेम एंड काउंटर क्लेम, राइट। इंडिया की पोजीशन इज दैट कि इट वाज अ सिचुएशन व्हेन इंडिया सपोर्ट कर रहा था, लेकिन विदाउट अटैक किए। किसको सपोर्ट कर रहा था? बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना को, है ना। बट पाकिस्तान इसको इंटरवेंशन मान रहा था। बाद में पाकिस्तान ने अटैक किया तो इंडिया ने भी अटैक कर दिया, काउंटर अटैक, राइट। चलिए, अब कलेक्टिव सिक्योरिटी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर लिखिए। तो सर वहां पे अगर जैसे डिस्कशन होता होगा, तो वो लोग अपनी फेवर के लिए देखते हैं, जैसे चाइना ये देखिएगा मेरा फायदा किसमें, किसको सपोर्ट करने में, या वो ये देखते हैं जस्ट लाइक अ कोर्ट की कौन सही है कौन गलत? यस, आपका वकील है सब। अच्छा। गलत को सही और सही को गलत साबित करना पर्सपेक्टिव है ना। ये तो पर्सपेक्टिव है कि कौन अटैकर कौन है, एग्रेसर कौन है। यस सर, यस। हाँ, तो ठीक है, तो मतलब वो लोग ऐसे चेक करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है। हाँ, इसलिए इंडिया कह रहा है कि भैया जो आप 5 मेंबर हैं इसको आगे बढ़ाइए, इसको ऐसे है 4-5 और जोड़ लीजिए, जापान को भी जोड़ लीजिए, ब्राजील को भी जोड़ लीजिए, जर्मनी को भी जोड़ लीजिए, इंडिया को भी जोड़ लीजिए। हाँ, और इसको थोड़ा सा डेमोक्रेटिक बनाइए। चलिए लिखिए CS इन द पोस्ट कोल्ड वॉर। यस सर। देखिए, in the post cold war era, yeah, the Security Council has identified broader concept of threat and insecurity to the world. In the post-Cold War era, Security Council has identified the broader range of broader, क्या लिखा मैंने, क्या लिखवाया? In the post-Cold War era, the Security Council has identified broader concept of threat and insecurity, including human rights abuses, comma, war crimes, comma, removal of elected government, and international terrorism. International terrorism. Yes, sir. The UN World Summit, the US World Summit, US की UN, UN General Assembly World Summit 2005, the UN, पता नहीं कौन है, अब ऐसे बार बार फोन करते हैं। Yes, sir. हाँ, the UN, क्या लिखिए, the UN General Assembly, World Summit 2005. Yes, World Summit 2005
has recognized Yes, sir. right, extensive ऐसे and मत लिखिए, extensive range of insecurity and threat. Yes, sir. like poverty, hunger, genocide, लिखा, Yeah. genocide, organized crime, proliferation of nuclear weapon, Yeah. state failure, natural calamities, calamity. हाँ, like earthquake, flood, हाँ. Yeah. Right. तो क्या लिखा? UN General Assembly World Summit 2005 has recognized extensive range of insecurity and threat like poverty, Yeah. Hunger. etc. हाँ. They proposed the concept of Yeah. or concept मत लिखिए, the doctrine of, so not only concept, it's a doctrine, the doctrine of Yes. the responsibility to protect, ऐसे कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं R2P ब्रैकेट में, R2P, 2 रोमन में लिखते हैं, रोमन में नहीं, अल्फा ये इसमें लिखते हैं डिजिट में, और R2P. ये डॉक्ट्राइन का मतलब टीचिंग्स होता है ना? हाँ, प्रीचिंग्स होते हैं, राइट. Later on, later, the concept of security extended to human security. Done? Yeah. अब लिखिए R2P क्या है. R2P क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, ये दोनों हम लोग थोड़ा बात करेंगे. देखिए R2P, responsibility to protect, R2P. Yeah. देखिए, responsibility to protect, known as R2P,
is a doctrine that seeks to ensure protection from mass atrocities, mass atrocity, crime of genocide, comma, war crimes, comma, ethnic cleansing. What? ethnic cleansing. माले सिंहली जो श्रीलंका में सिंहला क्या चाहता है कि तमिल को हम बिल्कुल खत्म कर दें यहाँ से, है ना? ओके, मतलब कोई एथनिक ग्रुप है तो उसको हटा दूसरे एथनिक ग्रुप को मारना चाहते, खत्म करना चाहते, हाँ? क्या लिखा आपने? The responsibility to protect, known as R2P, is a doctrine that seeks to ensure, right, mass atrocities, crime of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity. ये देखिए मुझसे थोड़ा सा कुछ ये हुआ है, मैं पिछले बार मैंने लिखा है ना, राइट टू प्रोटेक्ट इंक्लूड, मैंने क्या क्या लिखा है आपको, लिखिए, बोलिए तो कॉन्सेप्ट मिक्स करके। अच्छा, पिछला लिखा है दे प्रपोज द डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, लेटर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्सटेंडेड टू ह्यूमन सिक्योरिटी। नहीं, उससे पहले थोड़ा, उससे पहले वर्ल्ड समिट, जब वर्ल्ड समिट की बात कर रहा हूं मैं। यस सर, UN Assembly World Summit 2005 has recognized extensive range of insecurity and threat like poverty, hunger, genocide. No. नहीं, poverty को हटा दीजिए, poverty नहीं, poverty, genocide, yes, genocide. Hunger? No, hunger भी हटा दीजिए. Genocide, organized crime, proliferation of nuclear. हाँ, organized crime था, proliferation of nuclear weapon था, human security और ये right to R2P मेरे पास ना वो कंबाइन कर गया दिमाग में। हंगर नहीं है, नेचुरल क्लैमिटी भी हटा दीजिए, मैं याद है मुझे नेचुरल क्लैमिटी भी मैंने लिखाया था। सर स्टेट फेलियर है, सारे हार्ड पर्सपेक्टिव है। हाँ, स्टेट फेलियर है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, वार क्राइम्स है, जेनोसाइड है, मास एट्रोसिटीज है, हाँ, रिमूवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये सब है। पॉवर्टी, नेचुरल क्लैमिटी, हंगर दीजिए, ये ह्यूमन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव है, अभी बताऊंगा। राइट? हाँ, हटा दिया? यस सर। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ह्यूमन सिक्योरिटी और दोनों मिक्स कर गया और फिर मैं लिखाते गया। मुझे लगा कि ओहो, मैं तो उसको मिक्स कर दिया वहां पर। हाँ, अब लिखिए, अब क्या लिखा आपने यहाँ पर? It is a doctrine that seeks to ensure protection from mass atrocities, crime of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity. Worldwide. दुनिया में कहीं भी अगर ऐसा है तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोटेक्शन का, यस, वर्ल्ड वाइड लिख दीजिए या ग्लोबली लिख दीजिए, कुछ भी चलेगा। The concept of R2P, देखिए, the concept of R2P emerged in response to the failure of international community
response to the failure of the international community against mass atrocities committed in Rwanda and the former Yugoslavia in 1990s. The concept emerged in response to the failure of the international community against the mass atrocities committed in Rwanda and the former Yugoslavia during the 1990s. लिख लिया क्या? आपने रवांडा के बारे में सुना है? रेडियो रवांडा सुना तो है नाम, मतलब क्या है ये? रेडियो रवांडा। रेडियो रवांडा? हाँ, नहीं सुना है? आप जर्नलिस्ट हैं? रेडियो रवांडा, यस। रवीश कुमार वाज ए रेडियो जर्नलिस्ट। हाँ, वो तो शुरू किया था ऐसे। हाँ हाँ, और अभी भी करते हैं वो। मतलब मैं अभी भी स्टार्ट, रेडियो, हाँ स्टार्टिंग में भी किया था, अभी भी रेडियो पे आके वो स्टोरी कहते हैं। जैसे आपको चित्रलेखा है, एक कहानी है चित्रलेखा, है ना? यस यस। सुमित्रानंद पंत की, तो वो आके चित्रलेखा, जो सुमित्रानंद पंत की कहानी है चित्रलेखा, उसको बोलते हैं उस पे रेडियो पे आके। अभी भी कितना मुझे हो गया 3-4 साल सुने हुए उनको रेडियो पे। उससे पहले सुना था। अच्छा, रेडियो रवांडा क्या था? नो आइडिया? नो। अच्छा, बता। रवांडा में क्या हुआ, रवांडा में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, राइट, मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में हेट्रेड पैदा करना शुरू कर दिया। क्या पैदा करना शुरू कर दिया? हेट्रेड। सिमिलरली जैसे इंडिया में होता है कि यू कैन विटनेस हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, राइट, स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम, राइट। और ये जो लोकल लेवल का जो हैट्रेड है वो बड़ा हो जाता है, वही पॉलिटिक्स में आ जाता है, और मीडिया भी वही करने लग जाता है। मीडिया भी हैट्रेड, हाँ, अब आप देखेंगे कोरोना वायरस को लेकर के शुरू में मुस्लिम कम्युनिटी को कितना बदनाम किया गया, राइट। ये कम्युनिटी है, राइट, जो भारत को बदनाम करना चाहती है। कभी कभी पॉपुलेशन को लेकर के इनके ऊपर ये कसा जाता है। कभी कभी रिलीजियस, आपने लव जिहाद का नाम सुना है? यस। आपने फिर एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम सुना है? यस। आपने बी पॉलिटिक्स का, ये सारा जो पूरा पॉलिटिक्स है, राइट, इवन तो वो हैट्रेड पैदा करने की कोशिश की जाती है। वैसे जैसे वैसे ही रवांडा में हुआ। और रेडियो भी वही बोल रही थी, न्यूज़पेपर भी वही रहा था, टेलीविजन का टाइम नहीं था। लोगों को सही में लगा कि ये जो कम्युनिटी है और एक दिन ऐसे विस्फोट कम्युनल वायलेंस हुआ और मेजॉरिटी कम्युनिटी ने उठ करके माइनॉरिटी कम्युनिटी का कत्लेआम कर दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी देखते ही देखते रह गई, कुछ नहीं कर पाई। मतलब वायलेंस, कत्लेआम, मतलब वायलेंस, यस, वायलेंस। मार के नदियों में फेंके जाने लगा, उनको मार के तालाबों में फेंकने जाने लगा, मार के कुओं में डाला जाने लगा, गड्ढा बना के मार के उसमें फेंका जाने लगा, विदाउट एनी डूइंग एनी क्राइम। यस। महिला, पुरुष, बच्चे, सबको मारा गया एक तरफ से, क्योंकि ये माना गया कि वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, राइट, वो क्या है, वो टर्माइट है, वो इस कंट्री के लिए दुश्मन है। फॉर एग्जाम्पल, मास एट्रोसिटीज डन बाय हिटलर, यस,
in Germany on Jews, right, on Jews. So तो ये 1990 के बाद होता है राइट टू R2P, और रेडियो रवांडा होने के बाद यूगोस्लाविया में बहुत बड़ा लेवल पे कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, माइनॉरिटी को मार दिया गया। आपको पता है जो श्रीलंका में भी जो प्रॉब्लम है माइनॉरिटी मेजोरिटी का, यस, श्रीलंकन Tamil are minority and Singlas are majority. Right? And there's a huge, war crime, atrocities in Tamil Nadu also. So Rwanda होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगा कि नहीं, मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन ही कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये भी है कि अगर किसी स्टेट में निर्दोषों को मारा जा रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये फर्ज बनता है कि वहां पर जाकर के बोले कि यू आर डूइंग रॉन्ग, राइट। सो हियर यू कैन सी कि पहले सीएस का पहले का क्या मतलब था, एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल एग्रेशन। हाँ, और अब ये हो रहा है कि एक ही कंट्री में अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का इशू है उसको भी वो देखें। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंटरनल इश्यूज भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर आ गया, लाइक जेनोसाइड, राइट। यस सर, आपने लिख दिया, फिर लिखिए the R2P was unanimously adopted, R2P unanimously adopted in 2005 at the UN World Summit, at the UN World Summit. The UN World Summit document clearly states that the UN World Summit document clearly states that each individual state has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crime against humanity. The UN World Summit document clearly states that each individual state has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crime against humanity. Done. Yeah. Yeah. In case of failure, in case of failure, yeah. In case of failure, the international community, through the platform of UN, has a responsibility. Yeah. In case of failure, the international community, through the UN platform, has a responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian, and other peaceful means to protect population from genocide,
to protect population from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crime against humanity. Done? Yes, sir. यार R2P ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही पूछते हैं, मतलब अब लिखिए 3 pillars of R2P. 3 pillars of R2P. Yes, sir. देखिए पहला लिखिए. Every state has, again वही repetition है, every state has responsibility to protect its population from mass atrocity, crime, from mass atrocity. Every state has responsibility to protect its population from 4 mass atrocity. 4 kind of mass atrocities: genocide, war crimes, crime against humanity, and ethnic cleansing. Every state has the responsibility to protect its population from 4 mass atrocity crimes: genocide, war crimes, crime against humanity, and ethnic cleansing. Second one. Yeah. पहला लिख दिए, second लिखिए. The wider international community has the responsibility to encourage and assist individual states in meeting that responsibility. Yeah. Third लिखिए, if a state is failing to protect its population, comma, the international community must be prepared. The international community is prepared to take appropriate collective action in a timely and decisive manner. In timely and decisive manner, and in accordance with the UN Charter. हो गया? एक सेकंड से. लिखिए आराम से. Yeah. लिखिए, पैरा चेंज कीजिए और लिखिए R2P has been invoked. R2P has been invoked Yeah. in more than 80 UN Security Council resolution. More than 80 UN Security Council resolutions since 2009. Since 2009. Yes, sir. Concerning crisis in Central African Republic, Yes, sir. Democratic Republic of the Congo, Yeah. Liberia, Libya,
Yes, sir. Somalia, Yes, sir. South Sudan, Yes, sir. done? Yeah. So हमारा ये right to peak खत्म हो गया. अब जो third देखिए, the changing nature of security, colon human security. Changing nature of security, colon human security. Yeah. It is a broader concept of security. It is a broader concept of security, and it is universal in nature. It refers to security from all kinds of threat. Yeah. Including hunger, flood, disease, poverty, natural calamity, and list goes on. Yeah. The threat against COVID-19, the threat against coronavirus, actually COVID-19, threat against coronavirus, yeah, comes under the concept of human security. Yeah. Yeah. Ramesh Thakur, comma, a noted scholar, Yes. again, comma, has argued that while CS and R2P is a hard concept of security, while CS matlab collective security, and while CS and R2P, while CS and R2P is hard perspective of security, comma, human security is a soft concept of security. Human security is a soft concept of security, which includes all kinds of threat prevalent in the world, especially in the third world. Yeah. Right? The concept of human security has evolved in the backdrop of tsunami 2004. The concept of human security has evolved in the backdrop of tsunami 2004. Yeah. It is based on the idea that Yes. the mother nature Yeah.
did not discriminate between Muslim and Christian, Tamil and Sinhalese, poor and rich, native and foreigner. Yeah. Foreigner. The division is socially constructed. Let's talk about, okay, the divisions are socially constructed. Yeah. Indeed, full stop. Indeed, comma, we are one human family. We are one human family. Yes. And we inhabited the same planet that is called Earth. We inhabit the same planet called Earth. Yeah. The so-called soft threat, Yeah. like hunger, lack of safety drinking water, sanitation, and hunger, lack of safe drinking water, sanitation, and endemic disease kills millions every year. Kills millions every year. Yes, sir. The UN Millennium Development Goal and the Sustainable Development Goal have targeted to protect people from Yes, sir. several threats. Yes. हो गया? Yeah. कि ये कम से कम सिक्योरिटी खत्म हो गया. जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, R2P, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये खत्म हो गया. अब ये डेटरेंस बचा है और क्या बचा है? और ये बचा है, लेकिन 10-25 हो गया. बैलेंस ऑफ पावर, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पावर. हाँ, पावर, सिक्योरिटी, क्या नाम है, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो गया. सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो है. अब एक चीज 2 मिनट में कर लीजिए, बता देता हूं. क्या है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी हम जानते हैं. एक कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव डिफेंस का. कलेक्टिव डिफेंस का क्या है कि हम लोग ग्रुप बना लेते हैं वर्ल्ड वाइड, और उस ग्रुप में किसी के ऊपर अटैक हुआ तो हम सब लोग उसको अटैक कर देंगे. जैसे नाटो का कॉन्सेप्ट है, वो किसके ऊपर है? कलेक्टिव डिफेंस का. या सेंटो या वार्सो पैक्ट, जो वार्सो पैक्ट है, वार्सो पैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर है? कलेक्टिव डिफेंस. राइट, कलेक्टिव डिफेंस, राइट, ग्रुपिंग अमंग द नेशन स्टेट. बट जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इट इज a universal. It is under UN, and UN is an international organization. Even NATO is an international organization, but UN has one policy for all, but NATO has one policy for its own member, right?
Yes, sir. So Nehru was not in support of collective, defense, but Nehru was in support of collective security, right? And that is why he started NAM, right? Yeah. अब जितने भी कलेक्टिव सिक्योरिटी क्रिटिसिज्म है वो कौन करेगा? ऑफ कोर्स जो रियलिस्ट हैं वो करेंगे और ये बोलेंगे कि ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ये फ्लॉडलेड कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। फ्लॉड कॉन्सेप्ट। जॉर्ज मीरसामर है, ये लोग किस पे बिलीव करते हैं? ये बीओपी पे बिलीव करते हैं और ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ये फ्लॉड आइडिया है, ये एस्टैब्लिश नहीं कर सकता पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी कौन एस्टैब्लिश करेगा? बीओपी ही करेगा, राइट? या। तो इतना ही। कितना पेज हुआ आज? ज्यादा पेज नहीं हुआ आज तो सर मतलब आगे पीछे अगर देखें तो 5-6 हो गए। 6 हो गए। चलिए, तो आगे मैं डेटरेंस रह गया, थोड़ा सा है डेटरेंस। फिर डेटरेंस को पढ़ाने के बाद नेशनल इंटरेस्ट, वो भी थोड़ा ही है, और नेशनल इंटरेस्ट के बाद आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ IAS, राइट? ओके सर। हाँ, तो कुछ ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं आज जो मैंने बताया? नहीं सर, क्लियर है सब कुछ, है ना? यस। हाँ, याद रखने की चीजें हैं, है ना? तो जब मैंने क्या कहा कि जब खिचड़ी हो तो बार बार खाने की जरूरत होती है। हाँ, वो पेट भरे रहने के लिए, नहीं तो भूख लग जाएगी, है ना? हाँ, तो फिर प्रॉब्लम होगा, राइट? हाँ, डाइजेशन होगा तो कर लिया था। हाँ, तभी आई रिमेम्बर दैट लाइन की कल तो लिखा था। हाँ, राइट। तो आप जब आप जी लिखिए, कल वाला भी पढ़िएगा, परसों वाला भी थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, राइट? कि हमने क्या पढ़ा कल, बार बार पढ़ेंगे तो ये याद रहेगा। फाइन। कंपैरेटिव भी कर रही हूँ मैं, मतलब वो तो मैंने कर लिया, बट साथ साथ करती हूँ, और ग्लोबलाइजेशन भी चल रहा है, और ये भी। आप कल बीओपी के क्वेश्चन दे दीजिए। कल मैं दे दूंगा, ठीक है? या। चलिए फिर मिलते हैं कल। या श्योर सर, बाय सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, मोस्ट वेलकम।